जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। वैलेंसी हाइड्रोजन एटम्स के वो नंबर है which combine with one atom of that element or the number of the bond formed by the one atom of that element in the following compound. कोवलेंट सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी वो नंबर होती है बेसिकली जो हाइड्रोजन एटम्स की अमाउंट है जो कंबाइन करते हैं एक एटम के साथ, या फिर वो बॉन्ड जितने बन रहे होते हैं दूसरे एटम के साथ। जैसे कि इन केस ऑफ HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन लिए बॉन्डिंग हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से शेयर होता है, दोनों उसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर शेयर करते हैं। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी वो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स होता है। हाइड्रोजन एटम की अमाउंट होती है जो कंबाइन होती है दूसरे एटम के साथ, या फिर नंबर ऑफ द बॉन्ड जो बनता है दूसरे एलिमेंट के साथ। जैसे कि इन केस ऑफ HCl, जैसे इन केस ऑफ H2O, जैसे इन केस ऑफ NH3, जैसे इन केस ऑफ CH4। जो जो हमारे वैलेंसी है क्लोरीन की इन द केस ऑफ HCl is 1. The valency of the oxygen in case of the water is 2. The valency of the nitrogen in case of ammonia NH3 is 3. And the valency of the carbon in case of the methane, which is CH4, is 4. सिंपल और आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर इटसेल्फ आयंस मौजूद हो, पॉजिटिव पार्ट मौजूद हो, नेगेटिव पार्ट मौजूद हो। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन। वैलेंसी सिंपल आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर आयंस मौजूद होंगे उसमें वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये electrons in their valence shell, क्योंकि ये एटम्स लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे या दे देंगे।
और अपना ऑक्टेट सेकंड शेल का कंप्लीट कर लेंगे. दे लूज ए इलेक्ट्रॉन टू हैव द वैलेंसी ऑफ द 1, द 2 एंड द 3 रिस्पेक्टिवली. ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन हैव 5, 6 एंड 7 मोर देन 4 हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं. Why does bond formation take place? Can you give me the answer? Yes, it takes place because atoms are always in a constant struggle to reach the stable state. And what is this stable state? Well, if the atoms have only one shell, then the stable state is achieved when 2 electrons are present in it. And if the atom has 2 or more than 2 shells, then the stable state is achieved when the outermost shell contains 8 electrons. It's called an octet. But the stable state is seen only in case of a few elements. We know that elements like helium, neon, argon, etc. have atoms with such desired electronic configuration. But what about the case of atoms which do not have this octet? Yes, they will participate in bond formation. That means they will either give or take or share electrons. But wait, who decides how many electrons will participate in the bond formation? Or who tells the atoms if they've to give or take electrons? Well, the answer to these questions is valency. Let's understand this concept in detail. In simple words, valency is defined as the combining capacity of an element. Now, what exactly do we mean by this? When we say combining capacity, that means how much can an atom bond with another atom. Does that mean how many electrons can be given or taken or even shared? Yes. Does the capacity of an atom to give electrons, accept electrons or even share them in order to achieve the octet state can be termed as its valency. And what about the case of elements with just one shell? That's correct. Trading of electrons is carried out for attaining 2 electrons in the outermost and only orbital in such atoms. Let us take simple examples to understand this. In case of hydrogen, we have just 1 electron in the outermost shell. That means it has to somehow add 1 more electron to the outermost shell. Thus, we find that the valency of hydrogen is 1 as it accepts or sometimes even shares electrons with atoms of other elements. So, can you tell me the valency of oxygen now? The electronic configuration of oxygen is 2, 6. That means it has 6 electrons in the outermost shell. So, how many electrons are needed to complete the octet? Yes, 2 electrons. Thus, the valency of oxygen is 2. It accepts or takes 2 electrons from other atoms for completing the octet. Now tell me, what will be the valency of magnesium? We know that magnesium has 12 electrons. That means the electronic configuration of magnesium is 282. So how many electrons will be needed now? 6. That's correct. And that's what we're able to see. 6 electrons are needed to complete the octet. But which atom will give away 6 electrons so easily? Is it even possible? Not really. Then how will magnesium complete its octet? This is where the concept of donating electrons comes into the picture.
If managing the gain of 6 electrons is difficult, then can it think of giving or donating the 2 electrons? Yes, absolutely. So if magnesium gives away 2 electrons from its outermost shell, then we say that the valency of magnesium is 2. That means it's not only about how many electrons can be taken, but also about how many electrons can be given by the atom. That is how we calculate the valencies of various elements. Now, to understand the concept better, let's take an example of elements forming one compound. Maybe we can think of sodium chloride. For the formation of one molecule, we need one atom of sodium and one atom of chlorine. What are the valencies of each, by the way? Sodium has the electronic configuration 281, while chlorine has an electronic configuration 287. Before I tell you what happens, I want you to give it a shot. What do you think will happen? Doesn't this indicate that sodium will donate one and chlorine will accept one electron to complete their respective octet state? Yes, that's absolutely correct. And that is what helps in the formation of sodium chloride molecule. Chlorine needed one electron which it got from sodium, and sodium gave one electron as it was the easiest way to achieve stability. So the valency of both sodium and chlorine is 1. Does this mean that only elements having the same valency always combine together to form a bond? Not really. Just take the simple example of a water molecule. We have seen that the valency of hydrogen is 1 while that of oxygen is 2. Here, hydrogen needs 1 electron while oxygen needs 2 electrons. Both need electrons. So how do the atoms combine in this case? How will the bond formation take place then? Well, they will both share electrons with each other. But how? It's not that straightforward. We will understand it in one of our future videos. For now, we have to know that one atom of oxygen combines with 2 hydrogen atoms to give us one water molecule. This is how atoms with different valencies combine with each other to form compounds. Now that we know how the concept of valency works, let's have a look at how the atoms come together to form independent units. Let's discuss the concept of molecules in the next video. कार्बोनेट कलेक्टिवली ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन जिनकी वैलेंसी -1 है और इनकी जो वैलेंसी हम कंसिडर करें वो 1 है पूरे बाइकार्बोनेट रेडिकल की phosphate radical PO4 combination of the phosphorus and the oxygen having -3 charge और इसकी वैलेंसी हम कंसिडर करें as 3. Now what is the concept of the variable valency? कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं that show more than one valency जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं इसको हम वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 वैलेंसी आयरन की 2 है फेरिक सल्फेट के अंदर Fe2SO4 होल 3 में जो आयरन की वैलेंसी है दैट इज 3 जनरली द लैटिन और द ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरम is modified to end in the OUS for the lower valency ferrous and to end in the IC for higher valency ferric. जब भी हमने हायर वैलेंसी आयरन की शो करनी होती है हम फेरिक के नाम से शो करते हैं जब भी हमने फेरस शो करनी होती है लोअर वैलेंसी तो हम OUS एंड पे करते हैं यहाँ पे हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो रहा है वैलेंसी क्या है रेडिकल क्या है एग्जांपल्स और वेरिएबल वैलेंसी अलोंग विद द एग्जांपल ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ कंपाउंड कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो बना होता है 2 और मोर एलिमेंट से जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो हमारा कंपाउंड बन जाता है केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास और ये आपस में कैसे कंबाइन हुए थे फिक्स्ड रेशियो बाय मास के हिसाब से कंबाइन हुए थे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास H2O वाटर है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा इफ देयर आर 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर नहीं हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इस तरह के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट के अंदर एलिमेंट्स
अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, हाइड्रोजन अपनी करेक्टरिस्टिक लूज कर देगा, ऑक्सीजन लूज कर देगा, और ये दोनों मिलके एक न्यू करेक्टरिस्टिक्स का सेट बनाएंगे that have entirely different properties, जिनकी बिल्कुल different properties होंगी. Compounds can't be broken down into its constituent element by the simple physical method. जो compounds हैं वो broke नहीं टूट सकते into its constituent element simple physical method के जरिए compounds को break नहीं किया जा सकता. For example, if we have carbon dioxide, the CO2 is formed when the element of the carbon and the oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12:32. 12 क्या है? कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास क्या है? 16, 16 इंटू टू हमारे पास आ जाता है 32, 12:32, 3:8 बाय द मास. ठीक है. सिमिलरली वाटर का क्या है? दो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की कितना मोलर मास है? 1 है, 1+1 2, रेशो ऑक्सीजन का 16 है. अगर हम इसको और ब्रेक करें तो हमारे पास 1:8 आ जाती है. बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स रेशो ऑफ 1:8 बाय मास. Classification of the compounds. Compound can be classified as the ionic compound and the covalent compounds. Compounds को हम ionic और covalent compounds में classify कर सकते हैं. Ionic compounds exist नहीं करते independently molecular form में. They form a three-dimensional crystal lattice. ये तीन three dimensional crystal lattice के form में होते हैं in which each ion is surrounded by oppositely charged ion, जिसके अंदर हर एक ion surround हुआ होता है negative ions के जरिए. Ionic compounds do not exist in independent molecular form. They form a three-dimensional crystal lattice. ये three-dimensional crystal lattice बना देते हैं जिनमें हर एक आयन सराउंड हुआ हुआ है oppositely charged आयन से. These oppositely charged ions attract each other very strongly. हर oppositely charged ion attract हुआ होता है दूसरे से बहुत strongly, जिसके रिजल्ट में ionic compound बनता है जिसका बहुत high melting और boiling point होता है. ये कंपाउंड्स है रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला NaCl KBr और CuSO4, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड. इन तीन फार्मूलाज के जरिए हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में. कोवलेंट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है. मॉलिक्यूल ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है कोवलेंट कंपाउंड की, और इसके फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं. जैसे कि वाटर हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और मीथेन हो गया. Now there are a few compounds with their chemical formula like water having H2O, sodium chloride also known as the common salt having the formula NaCl, silicon dioxide known as sand having chemical formula SiO2, sodium hydroxide known as the caustic soda having formula NaOH, sodium carbonate washing soda Na2CO3.10H2O, calcium oxide also known as the quicklime having formula CaO, calcium carbonate known as the limestone having formula CaCO3, sugar C12H22O11, sulfuric acid and acid having formula H2SO4, and the ammonia having formula NH2. So these are the few compounds with their common names and with their chemical formulas. If you have any question till here related to the compounds, you can ask. Between mixture and compound. Using a spatula, take a small quantity of sulfur powder and transfer it into a beaker. Add a small quantity of iron fillings into the same beaker using a spatula. Stir the contents of the beaker using a glass rod and label this mixture as A. Take a china dish and using a spatula transfer a small quantity of the mixture into it. Heat the contents in the china dish strongly by placing it on a wire gauze that is placed over a burner. Stir the contents constantly till a black mass,
that is compound of sulfur and iron, is formed. Cool and transfer the contents into a mortar and powder this using a pestle. Then transfer the powdered contents into another beaker using a spatula and label it Black Mass B. Test on the basis of appearance. Take a small quantity of mixture A and black mass B in 2 different watch glasses. Mix the mixture A in the watch glass using a glass rod. You will see yellow powder in which some iron fillings are visible. Then mix the black mass B in the watch glass using a glass rod. No iron fillings are visible in the black mass B. Thus we infer that a mixture is heterogenic and compound homogeneous in nature. Behavior towards a magnet. Place a small quantity of mixture A in a watch glass and a small quantity of black mass B in another watch glass. Show a magnet over the watch glass in which mixture A is taken. Iron fillings cling to the magnet since iron retains its properties. Show the magnet over black mass B. No particles attach to the magnet because iron loses its magnetic properties on forming a compound. Behavior towards carbon disulfide. Take a clean test tube and put a pinch of mixture A into it. Add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake the test tube well. Sulfur first dissolves, reappears after some time. When in the form of a mixture, sulfur retains its property. Take another test tube and put a pinch of black mass B into it. Then add a few drops of carbon disulfide into the test tube. Shake it well. No change is observed. In compound state, FeS, sulfur lost its original properties after reacting with Fe. Action of heat. Take a small quantity of mixture A in a china dish. Heat the mixture strongly. A black mass is obtained which is homogeneous. A compound of iron fillings and sulfur powder, FeS, is formed on heating. Take a small quantity of black mass B in another china dish. Heat it strongly. No change is observed. The compound FeS does not show any reaction on heating. Effect of heating with dilute HCl. Take a small quantity of mixture A in a test tube. Add a few drops of dilute HCl into it. Cork the test tube. Connect the test tube to another test tube with a bent tube. Heat the contents of the test tube gently. A colorless, odorless gas evolves. Collect the gas in the other test tube through the bent tube. Now remove the bent tube. Bring a glowing matchstick near the mouth of the test tube. The flame dips out, producing a popping sound and with a mild explosion. The gas evolved is hydrogen gas. Now, take a small quantity of black mass B in another test tube. Add a few drops of dilute HCl into it. Cork the test tube. Connect the test tube with the bent tube to another test tube containing copper sulfate solution.
Heat the contents of the test tube gently. A colorless gas evolves that reacts with copper sulfate to form a black colored precipitate. The gas evolved is hydrogen sulfide H2S, which reacts with copper sulfate to form black precipitate of copper sulfide. जी बच्चे जी बेटे, तो ये एक्सप्लेनेशन थी फॉर द कंपाउंड्स। अब हम मिक्सचर की तरफ जाने लगे हैं, जो आज का हमारा थर्ड पार्ट है और मेन पार्ट है मिक्सचर का। हमने वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी और कंपाउंड्स कवर कर लिए हैं। मूविंग टुवर्ड्स द मिक्सचर, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिक्स होते हैं फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं होती है मिक्सचर के अंदर, सिर्फ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सिंग अप पे जो कॉम्पोनेंट सब्सटेंस है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है। उसकी अपनी, जैसे कंपाउंड्स में उनके अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं रहती हैं, वो दोनों कंबाइन करके न्यू सेट दे रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक्स का। उसके बिल्कुल ऑपोजिट मिक्सचर के अंदर कंपाउंड्स की अपनी और एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं। और मिक्सिंग अप कंपोनेंट्स सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल identities and properties, the mixture can be separated into the parent compound। जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट्स में किसी भी फिजिकल मेथड के जरिए। कंपाउंड्स में हम किसी भी फिजिकल मेथड के जरिए दोबारा से अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं ले सकते थे, लेकिन मिक्सचर में हम ले सकते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। Now there is an important short question that what are the two types of the mixture? So mixture have the uniform composition थ्रू आउट। अगर किसी भी एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब स्पीशी वाला मिक्सचर। जैसे कि एयर है, जैसे कि गैसोलीन है, जैसे कि आइसक्रीम है। हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब स्पीशीज, और मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स और कॉम्बिनेशन टू और मोर एलिमेंट। अगर तो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कि सॉइल के केस में होता है, रॉक के केस में होता है और वुड के केस में होता है। सॉइल में कहीं पर कंकर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर मट्टी ज्यादा हो सकती है। सेम गोज विद रॉक, कहीं पे साइज बहुत छोटा हो सकता है, कहीं पे बहुत बड़ा हो सकता है। तो सॉइल, रॉक और वुड हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिनके अंदर डिफरेंट स्पीशी के कॉम्बिनेशन है। और अगर होमोजीनियस है जिसमें सेम स्पीशी का कॉम्बिनेशन है तो थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंसंट्रेशन है या जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगी। Now this is the most important table, which is actually the difference between the compound and the mixture by using 7 to 8 points. The point number one is that compound is formed by the chemical combination of the atoms of an element। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से जो चीज बनती है वो कंपाउंड है। मिक्सचर बनती है बस सिंपल मिक्सिंग, सब्सटेंस की सिंपल मिक्सिंग की वजह से। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो न्यू आइडेंटिटी उनकी बनती है। मिक्सचर्स अपनी प्रॉपर्टी वैसी ही रखते हैं। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं। कंपाउंड्स हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास के जरिए बनते हैं। उनके अंदर जैसे वाटर बनाना है या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, दो ऑक्सीजन की जरूरत है, वाटर में दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन की जरूरत है। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर से कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन पैटर्न नहीं होता है। द कॉम्पोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जो कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन वी आर डीलिंग विद अ मिक्सचर तो हम फिजिकल मीन्स सेपरेट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड के अंदर हर कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो सकता है। मिक्सचर के अंदर इसके अंदर दो और मोर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं तो एक केमिकल फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपाउंड हैव होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, इनकी होमोजीनियस सेम कॉम्पोजिशन होती है कंपाउंड की हमेशा। मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड के पास शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जो मिक्सचर्स होते हैं उनके कोई शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड नहीं होता। ये 7 डिफरेंसेस हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन योर
chapter in your book for the long के लिए अगर आता है तो हमें 7 लिखने हैं पूरे के पूरे डिफरेंस. अगर शॉर्ट में आता है तो we are supposed to write just 3 of them. और एमसीक्यू में ये नहीं आएगा इस तरह से. ओके बेटे, तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कंपाउंड्स एंड मिक्सचर पे डिटेल लेक्चर एंड हो रहा है. अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू दिस तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल शो यू अ वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर. In this video, you'll learn the difference between an element, a mixture, and a compound. Firstly, some definitions. An element is a substance that cannot be broken down into anything simpler. A mixture is a substance consisting of two or more substances mixed together, not in fixed proportions and not chemically bonded. And a compound consists of two or more elements chemically combined. So consider the two elements iron and sulfur. We should perform 4 tests. Firstly, on iron and sulfur separately. Secondly, on a mixture of iron and sulfur. And thirdly, on a heated mixture of iron and sulfur. The 4 tests we are going to do are appearance, action of water, action of an acid, and finally, action of a magnet. So starting with performing the tests on iron and sulfur separately. Iron filings are dark grey crystals, whereas sulfur is a bright yellow powder. You will see that the iron sinks and the sulfur floats. With iron filings, you can see bubbling. The iron reacts with the acid to produce hydrogen gas, which can be tested for by holding an empty tube over the tube of iron filings and acid. After a short time, we remove the upper tube and immediately put a lighted splint to the open end of the tube. A pop is heard indicating hydrogen gas. With sulfur and hydrochloric acid, there is no visible reaction. If the iron is sprinkled onto a sheet of paper and a magnet is moved underneath the paper, you will see the iron filings follow the magnet as they are attracted to it. When the same is done with the sulfur, you will see that the sulfur is not attracted to the magnet. So from these 4 tests, it can be seen that iron and sulfur are 2 completely different elements and behave differently in the 4 tests. Iron is a metal element, sulfur is a non-metal element. So now let's look at performing those same 4 tests on a mixture of iron and sulfur. So some iron filings and sulfur powder are mixed together on a piece of paper, and we now have a mixture of iron and sulfur. If we add a bit more iron and mix, we still have a mixture of iron and sulfur. We could add a bit more sulfur and mix. It's still a mixture. As said earlier, the components of a mixture, in this case iron and sulfur, are not in fixed proportions. So let's now perform those same 4 tests on the mixture of iron and sulfur. In the mixture, we can clearly see the dark grey crystals of iron and the bright yellow powder of sulfur. We can see that the iron in the mixture still sinks and the sulfur floats. The components of the mixture have separated. The iron in the mixture reacts to produce hydrogen gas as before. It gives a positive pop test when mixed with air and the mixture ignited. The sulfur in the mixture, however, gives no visible reaction. As the magnet is moved underneath the paper, you will see that iron is attracted, but the sulfur is not. Again, as in the test with water, the iron and sulfur can be separated, illustrating the fact that the components of the mixture can easily be separated by physical means. From these 4 tests, it can be seen that the components of a mixture behave in the exact same way as they did when they were on their own. That is, they retain their separate identities. Finally, let us perform the same 4 tests on a heated mixture of iron and sulfur. For this, we need to carefully select our amounts of iron and sulfur. If the mixture of iron and sulfur is heated briefly and then removed from the flame, a red glow spreads throughout the mixture which turns black. Heating the mixture causes the iron and sulfur to bond chemically to form the compound iron 2 sulfide. This can be shown by the equation. Now let us look at how the compound iron 2 sulfide behaves in the 4 tests. It's a black solid.
different appearance to either the iron or the sulfur. It all sinks, there is no separation. The reaction between the iron 2 sulfide and hydrochloric acid should be done in a fume cupboard, as when the hydrochloric acid is added to the iron 2 sulfide, bubbles are seen, but the gas formed is hydrogen sulfide gas, which is toxic. As the magnet is moved underneath the paper, you will see that the iron 2 sulfide is not attracted as it is not magnetic, so we cannot separate the heated mixture. However, as often happens in class, if the wrong amount of iron or sulfur is used so that there is excess iron, then the iron 2 sulfide will be attracted to the magnet because of this too much iron. Okay, wait, this was a revision for the compound and the mixture. If you have any question, you can ask. If not, if you can ask me the question, any question related to these topics in the first 5 minutes of the next lecture.